Student, in this architectural contribution, what we should be write? You know that there are three type of temple architecture in India. Hello student, today we are going to discuss history analysis. Especially I will be talking about the history only, but in our session of today there will be two important paper, GS paper 1 and GS paper 2 will be discussed by the different faculties here at. You know that yesterday the examination happened for GS paper 1 and paper 2. In the GS paper 1 we will have our timing from the 10 am to 1 pm, and then from the 2 pm to 5 pm we will have GS paper 2 discussion. In the GS paper 1 I will be taking up the questions of history, and then our other colleague Priyanka ma'am will also take some questions of history. Then we will have the different teacher like the different teachers. We have Huma ma'am, then we have different teachers like we have Vijender sir, then Vivek sir. These all teachers will be taken up the different topic. Okay, so this is what we know about this perspective. So today let me tell you that how many questions have been asked in the GS paper 1. You know that in the GS paper 1 there are 20 questions are asked. Out of these 20 questions, 10 questions are mostly from the 150 word questions. So 10 questions are roughly from the 150 word, that is to be marked for 10 marks, and then we have 250 words answer questions, it was for 15 marks. So we know that we have how many questions are there. So out of these 20 questions have been asked in the examination yesterday from GS paper 1, 6 questions had been from history. Let me tell you that out of these 6 questions, what is the background and the area of these 6 questions, student? In these 6 questions, if you talk about this one, you can see here on this board here is that out of these 6 questions, one question is from ancient India. This is related to the Vedic period, the society and economic differences between the early Vedic period and the later Vedic period. Last year also in the GS paper 1, these questions had been asked related to Vedic period. Vedic period is a very important period in which questions have been repeatedly asked in the examination. Apart from it, we have 2 questions from the medieval India, including the art and culture. You know, medieval India से questions जो पूछे गए हैं, one is from the Pallava period. The Pallava period especially comes in the time of the later ancient India also and medieval India also. And then we have the Chola is a part of medieval India, early medieval India basically. And this art and culture questions have been asked from Chola, and the Pallava are a part of medieval India also and a part of art and culture also. 2 question student is from modern India. Okay, and then 1 question is from world history. So in total there are how many questions? There are total 6 questions have been asked from the history sections in the GS paper 1, and then 7 to 8 question is from geography also, and then we have the 5 to 6 question is from Indian society. Okay, so different Huma ma'am and other teachers will take up that topic in detail. Now let me tell you that what are these 6 questions have been there that we should be discussing here. So in this one, we have these 6 questions. The question 1 talks about underline the changes in the field of society and economy. What does they talk? They talk about underline the changes in the society and economy from the Rig Vedic period, to the later Vedic period. Okay, this is your questions. So this question will be especially is a very important topic and related to that. Last year also questions had been asked that what is the social and the religious composition of the Vedic period continues to this time. This similar question was there last year also. Second question talks about the estimate the contribution of the Pallavas of Kanchi to the development of art and literature in South India. Development of art and literature in South India. ये हमारे लिए questions है. The question 3 is the what were the events that led to the Quit India movement? What they are asking events, and they are asking the what is its result है ना. This is the questions they have been asking. Question 11 जो है, though the great Cholas are no more it. चोलाज अभी तक नहीं है, नो मोर है ना. देयर नेम इन स्टिल रिमेंबर विद द ग्रेट प्राइड बिकॉज ऑफ देयर हाईएस्ट अचीवमेंट्स इन द डोमेन ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर है ना. सो दिस इज क्वेश्चन 11. क्वेश्चन 12 इज हाउ फार इज इट करेक्ट टू से दैट द वर्ल्ड वार 1 फर्स्ट वर्ल्ड वार 1 वाज फाउट एसेंशियली फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर. ये क्वेश्चन 12 है. देन क्वेश्चन 13 टॉक्स अबाउट हाउ फार वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड द cottage industries in India, and handicrafts and the cottage industry in India. This is basically known as the deindustrialization. Okay, student. So we have seen that in total we have seen that in total there are
6 questions are there. Out of these 6 questions, which questions I will be taking, let me tell you. So out of the 6 questions, I will be taking questions from the art and culture and world history. The questions which are highlighted here on the board in the pink color, question number 2, question number 11 and question number 12, it is related to art and culture and world history. I will be discussing in detail for the next half an hour, and Priyanka ma'am will discuss question 1, then question 3 and question 13. Okay student, so let us discuss in detail that what are these questions and how can we take it more in detail. All right, so here the first question comes here. The first question that we should discuss in detail, the question number 1 tell you, the question is especially talks about estimate the contribution of Pallava's of Kanchi in the development of art and literature in South India. Okay, so here do you know a student how will we start writing? We will in this question we will divide our answer into some part, है ना. हम अपने पार्ट को आंसर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? We can divide our answer into part 1, like can be the introduction, then can be architectural contributions, then there will be the cultural excellence, then can be the literary contributions, है ना, and then will be religious and the philosophical contributions, and then we can write a conclusion of this question. Okay, so let me tell you that how we can discuss more and more detail. All right, so here if I talk about the first, let us take up a get up that how can we write this question. So first of all we will write an introduction in this one. So in order to write introduction, we will take the help of what is the general knowledge about the topic. So first of all we are going to write about introduction, okay, in about 30 words, है ना. 30 वर्ड से कम वर्ड में हमें यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखना है in this question. In this introduction, we can write about the Pallavas of Kanchi within bracket 4th century to 9th century. They played a significant role in this shaping the cultural landscape of South India. Their contribution to the art and literature are foundational to the South Indian heritage and culture. It lasted till the time of the Pandyas and the Chola also. They have a great impact of that. This is what we can write about. In the introduction, we can also write about who are the most important ruler of this one who played very important role. So in the most important ruler who played a very important role in this one, we can talk about we can especially talk about the ruler like Mahendra Burman and Narsim Burman II who had defeated Chalukya's ruler Pulikeshi II. Briefly, we can write about in 25 to 30 words. We will write about the introduction. Thereafter we will take up the issue to write about. तो first question हमारा होगा the architectural contributions, है ना. The first questions, the first step here we can take after this one will be the architectural contribution. Student, in this architectural contribution, what we should be write? You know that there are 3 type of temple architecture in India. One is the Nagar style that is developed by Guptas in North India. Then we have the Dravidian style developed by Pallavas and further contributed by Cholas in South India. And then we have Vesara from Karnataka. 3 तरह के हैं. We will not go discuss in detail, but here in the first point we will explain that what is Dravidian architecture, है ना. Dravidian temple style, Dravidian temple style. We will write about it. Okay. Then we will discuss the most important temples made there at. जिन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल इन्होंने बनाया उसके बारे में हम बात करें. सो वी कैन डिस्कस अबाउट 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल दैट इज मेड बाय दीज पीपल्स, है ना. इन दिस क्वेश्चन स्टूडेंट वी कैन राइट अबाउट व्हाट इज द मेन फीचर्स इनसे क्या है. इन द फीचर स्पेशली स्टूडेंट वी कैन टॉक अबाउट द फीचर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इनका गोपुरम है. गोपुरम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर. पिरामिडल टावर्स, भीमना है ना. Then we have Dwarpal, etc. These are the important features we can be writing in the Dravidian temple style. Thereafter, we can take example student of the Kailash Nath temple at Kanchipuram. We can take example of Kailash Nath temple of which region of Kanchipuram.
ओके, सो वी विल राइट अबाउट व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस टेम्पल. इस टीचर में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है ना. वी कैन टॉक अबाउट द बीमनाज आर देयर, द वाटर रिजर्वेयर्स आर प्रेजेंट है ना. दीज ऑल थिंग्स वी कैन डिस्कस इन डिटेल इन दिस क्वेश्चन. Thereafter we will take example of third temple, that is the कांचीपुरम टेम्पल है ना. तो हमारा दूसरा है the Sore temple, and we can also write about who had made this one. So we have Sore temple that is situated at the Mahabalipuram. So we can discuss in detail that what is the Sore temple at the Mahabalipuram and how these things are very important. इसके साथ साथ हम महाबलीपुरम में पंचरथ की भी बात कर सकते हैं है ना. We can also discuss about in the Mahabalipuram only we have the region called Panchrath, Panch Pandav है ना. Panchrath that is especially named in the 5 Pandavas of here. So we can discuss about Panchrath in detail. So this is the first point we can talk about the architectural contribution of the Chola. And this is a major point that we can discuss here in this part. Apart from it, what other we should know here is that we can talk about that Neelkant Shastri, अगर historian बोलते हैं. So Neelkant Shastri is a very famous historian of South India. He talks about that the Pallava architecture laid the foundation for the Dravidian style of temple architecture in India, which reached its zenith under the Cholas and thereafter the पांड्याज है ना. दिस इज व्हाट वी नो. ये हमारा मेन पॉइंट्स होगा. सेकंड पॉइंट हम इसमें लिखेंगे. द सेकंड पॉइंट दैट वी कैन राइट अबाउट, सो दिस इज द आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशंस. देन वी हैव स्कल्पचर्स. देन वी कैन राइट अबाउट sculpture briefly. So in the sculpture what we should be thinking about, we can write about the Mahabalipuram reliefs. So reliefs of Mahabalipuram and especially अगर बात करें the Arjun penance, इसमें बहुत बड़े examples हैं ना. The example, most important example of this one is a Arjun penance sculpture that is especially known as the Arjun penance is known as the descent of the Gangas है ना. We can discuss about that in such detail है ना. This is what we know about this perspective student. Okay, apart from it we will take the third important examples of the South India. हमारा मेन एग्जाम्पल्स यहाँ पे होगा the literary contributions. Okay, then we will write about literary contributions. Literary contribution. In this literary contribution student, what are the different topic we will take up? The first thing we can take up the Sanskrit and Tamil है ना. तो यहाँ पे जो दो लैंग्वेज बहुत डेवलप हुआ है, एक का नाम है संस्कृत and second language developed by this time is a Tamil. So we can take an example of the Sanskrit and Tamil, and then we can write about, especially from the Sanskrit point of view, these people flourished a lot. Especially we have the King Mahendravarman first. He himself was a first right scholar. He had written a very important book of the Sanskrit language, and this book is called Mata Vilas Prahasan. So Mata Vilas Prahasan is a very important book that is written by this person, especially in this Sanskrit language only. So we can write about that. तो इसके बाद हम तमिल के बारे में लिख सकते हैं. आपको पता है ना कि संस्कृत भाषा में if you talk about coins, especially if you talk about the coins of these people, do you know the coins of Cholas and the Pallavas is to be written into two languages. The silver coin, the copper coin and other low grade coin were to have the Tamil inscriptions, whereas the gold coin is to have Sanskrit inscriptions so that the coin can be famous across the Indian subcontinent है ना. This is what we know about this perspective. So ये हमारा literary contributions हो गया. फिर हम इसमें लिख सकते हैं कई सारे जो अलवार नैनार्स है, they played a very important role in the rise of language here at है ना. So we can write about that perspectives also. Okay student, then we will talk about the copper plate also. इसके साथ साथ हमारे पास copper plate inscription भी है. So we have copper plate inscription also. So we can discuss about these things in detail in order to answer this question student. Okay, फिर हम जो last point लेंगे here to discuss our point है ना, to discuss our point, that will be the especially the cultural contributions है ना. So that what was the cultural contribution of this people. तो हम इसमें लिखेंगे religious plus philosophical contributions. So we can have religious plus philosophical contribution. Student, in this point we will especially write about the religious first,
In case of religious contributions, we have the example of the Westernism and Savagism, है ना. तो हमारा वेस्टर्निज्म और सैविज्म का बहुत बड़ा एग्जाम्पल्स हो सकता है ना, वेस्टर्निज्म एंड सैविज्म. सो वी हैव वेस्टर्निज्म और फिर हमारे पास है सैविज्म. एंड यू नो दैट दिस वेस्टर्निज्म एंड सैविज्म स्पेशली नोन एज अलवार्स and they are known as Nayanars. So Alwars and Nayanars, and here we can write about the important sons of Alwar and Nayanar. We can write about that what is their contributions. Especially we can talk about the Apar, Sambhadanar, है ना. Then we have the Manikavachar. These are the important scholars and the philosophers belonging to this topic. So we can discuss about that, and this will further help us to answer all of these things. Okay, student. So this is the way we can answer this question on the Pallava. This question was of the 10 marks only, and supposed to be answered in 150 word. So if you take up these points with some of the important facts, you will be able to score the highest marks out of at least 6 to 7 marks आपके आराम से बन सकते थे अगर आप ये पॉइंट्स अगर लिखते हैं एग्जाम में. ठीक है. सो अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन कैसा था, हाउ वाज दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन वाज लिटिल बिट मॉडरेट टू टफ. इजी नहीं था क्योंकि दे हैव आस्क्ड द रीजनल सेंट्रिक क्वेश्चंस. ओवरऑल क्वेश्चंस नहीं पूछा है. तो रीजनल सेंट्रिक क्वेश्चन था, तो ये हम एक क्वेश्चन बोल सकते हैं बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आल्सो. विदाउट फैक्ट्स यू विल नॉट बी स्कोर मोर देन 35% to 40% in the examination. So facts is very important to the facts will give you weightage for the scoring more marks in the examination. So I will take that this question was moderate to tough level के क्वेश्चन थे. ठीक है. चलिए स्टूडेंट हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, और जो हमारा जो अगला क्वेश्चन है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द आर्ट एंड कल्चर ओनली, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11. सो नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट, और आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है मेन पिक्चर्स है. दिस इज अ सोर टेम्पल एग्जाम्पल ऑफ द महाबलीपुरम, एंड सोर टेम्पल का एग्जाम्पल्स है आपके पास, एंड दिस इज अ स्टैचू फ्रॉम द महाबलीपुरम टेम्पल, दैट इज स्कल्पचर के पार्ट में आते हैं. एंड दिस इज अ मेजर एग्जाम्पल ऑफ द सोर टेम्पल विच इज सराउंडेड बाय द वाटर फ्रॉम द 3 साइड्स, है ना. वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ द टेम्पल आर्किटेक्चर स्पेशली इन द महाबलीपुरम. लेट अस डिस्कस दिस क्वेश्चन नाउ. हमारा क्वेश्चन है though the great Cholas are no more 8, but their name is still remembered with great pride because of their highest achievements in domain of the art and architecture. एक क्वेश्चन पूछा. ठीक है. तो सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम जो आंसर करेंगे वी विल टेक अप द सेम पैटर्न्स टू आंसर दिस क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट अबाउट, पहला चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे इंट्रोडक्शन. Okay student, we will write introduction here. In the introduction we will write about who are Cholas. हम बोल सकते हैं the Chola dynasty which flourished from the 9th century to 13th century southern India, है ना, left a landmark on the Indian history throughout the remarkable achievements in the art, architectures, culture and naval power. हम despite of the passage of centuries, Cholas are remembered for their monumental contributions, particularly these are the important points, है ना. ये हम points हमें यहाँ पे लिख सकते हैं. अब point हम लिख सकते हैं that who are the most important rulers. 2 रूलर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसके नाम आप इस एग्जाम में इस इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं. द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हेयर was the Raja Chola. Raja Chola first, and then second we have Rajendra first, है ना, Rajendra Chola first. So we can write about this in detail in this first introduction in about 30 word. Then second point हमारा इस क्वेश्चन में होगा, द सेकेंड पॉइंट वी विल टेक बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अब 250 वर्ड, तो थोड़ा हम अच्छे से लिखेंगे. तो सेकेंड पॉइंट हमारा इसमें होना चाहिए द आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशंस, है ना. तो पहला हमारा होगा आर्किटेक्चरल contribution. Student, in this architectural contribution which are the themes we are supposed to take up. Okay, let us discuss one by one कि हमारा मेन themes क्या होना चाहिए इस डिस्कशन में. So in this architectural contributions, first of all student we will write about the Dravidian temple architecture. So what is Dravidian temple architecture जो हमने पहले डिस्कस किया था. So first of all we will write about what is Dravidian
temple architecture, we will define them. Thereafter we will write about the Brihdeshwar temple. Brihdeshwar, same questions हम approach कर रहे हैं. Brihdeshwar temple, especially this is situated at Tanjore, है ना. That is made by Rajaraja first. Then we will write about Glangai Konda Cholapuram temple. That is situated at Glangai Konda Cholapuram only, है ना. यहाँ पे, और it is made by Rajendra first. So we will explain in detail that what is the main features of this temple, और इसको अच्छे से explain कर सकते हैं. और हम ये भी बोल सकते हैं कि आज नीलकंठ शास्त्री, there is a very famous historian, this historian called Neelkant Shastri. Neelkant Shastri is a very important historian of this period. So especially this person say that Chola's temple were not only used for religious purpose, but the Chola temple was also used for the cultural purpose, also used for social institutions, and then it is also used for the economic institutions, educational institutions and all. So these are the major points we can take up the issue in order to deal this topic, है ना. तो हमारा पहला पॉइंट हो गया आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द चोला. फिर हमारे पास होगा इसी में आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशंस में हम लिख सकते हैं वास्तु शास्त्र एंड टेम्पल लेआउट. इनके जो टेम्पल्स बनते थे ना, द टेम्पल्स विच वर मेड, especially these people is to have the most important Vastu Shastra. So Vastu Shastra was a very important point in this temple, and plus layout was well planned. So layout the temple was very planned. Layout में द्वारपाल्स कहाँ होंगे, गर्भगिरी कहाँ होगा, then Pradashna Path will be there, okay, then Gopurams will be more structured, then pyramidal type of towers will be there. These are the major things but taken care of by these peoples. अगर मैं आपको वास्तु शास्त्र की बात करूँ, टेम्पल लेआउट की बात करूँ, so these people is to ensure, but bus these people is to ensure the perfect symmetry, alignment and harmony with the cosmic and the earthly elements, है ना. ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप कांचीपुरम में भी देख सकते हैं, चोला में भी देख सकते हैं, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है ना. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशंस. देन सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे, द थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो हमारा इंट्रोडक्शन एंड पहला था आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशंस. द थर्ड विल बी द स्कल्पचर. So sculpture में the most important example student we will take up in the sculpture will be the Nataraj, है ना. सो नटराज का जो स्कल्पचर है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं, दैट नटराज दैट इज अ ब्रोंज स्कल्पचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज नोन एज अ डांसिंग सेवा. और आप भी जो भी देखते हैं ना, इसमें आपको दिखेगा दीज ब्रोंज आर नोन फॉर देयर परफेक्ट बैलेंस, ग्रेस एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पिरिचुअल बीइंग. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ द नटराज. वी कैन टॉक अबाउट नटराज में कितने हाथ है, क्या फीचर्स है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डमरू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग, है ना. सो वी कैन टॉक अबाउट इन डिटेल अबाउट द नटराज. पर्सी ब्राउन एक बहुत बड़े फेमस हिस्टोरियन है आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर के. उनका मानना था दैट चोलाज ब्रॉन्ज was defined as a zenith of the Indian art. इतनी बड़ी पावरफुल थे चोला आर्ट, है ना. सो वी कैन राइट अबाउट दिस वन. फिर हमारे स्टोन कार्विंग्स हो गया इसमें. दूसरी एग्जाम्पल्स हमारा हो गया स्टोन carvings. In the stone carvings, we can especially discuss about the statues of the Cholas, especially presented here. अब ये पिक्चर दे सकते हैं. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द चोला टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल का एग्जाम्पल है. एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द नटराज, है ना. इन दिस हैंड यू कैन सी दिस वन दैट दिस इज गिविंग अ ब्लेसिंग, दिस इज अ डमरू डिस्ट्रक्शंस, है ना. दीज आर द मेजर टॉप थीम्स टॉक्स अबाउट. एंड दिस इज अ टेम्पल एंड दिस इज अ शिप्स, है ना, जो नेवी उनकी है, जो नेवी बहुत इंपॉर्टेंट था. तो वी कैन डिस्कस इन डिटेल अबाउट दैट स्कल्पचर के बारे में. देन स्टूडेंट द फोर्थ पॉइंट हम इसमें लिखने जा रहे हैं, दैट व्हाट इज द अदर फीचर्स वी नो अबाउट चोला, जिसके बारे में वो बहुत जाने जाते हैं ना. तो हमारा मेन पॉइंट्स होगा द पैट्रोनोज ऑफ लिटरेचर एंड कल्चर. जिसमें हम लिख सकते हैं पैट्रोनोज ऑफ लिटरेचर एंड culture. This is a major point, student, that we can be talking about in detail in this question. So लिटरेचर में सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर कौन कौन से लिटरेचर है स्टूडेंट? तो सबसे पहला तमिल लिटरेचर बात करेंगे, देन संस्कृत लिटरेचर एंड देन वी हैव डांस एंड म्यूजिक, है ना. भारतनाट्यम जो है चीज़ें आपकी यहीं से डेवलप होती है.
So we can talk about in the literature, we can talk about the Tamil plus Sanskrit. Tamil plus Sanskrit language developed very one. Then we can talk about in the dance, we have Bharatnatyam, that is developed by these people, from these people only, Bharatnatyam. So we can discuss in detail about this Devdasi systems and all, है ना. We have Devdasi system. We can talk about food, इनके food resources हो गया, क्या food खाते थे, है ना. So we have the dosa is a very important contributions of these peoples, है ना. So we can write about. एक क्वेश्चन हम और भी लिख सकते हैं, but क्वेश्चंस पूछा नहीं. Questions have asked only the domain of the art and architecture, okay student. But here we can also write about the other things for which Cholas are mostly known, okay. And for this perspective only questions have been asked in the examination. So point number 5 हम एक बार लिख देंगे, naval powers, है ना. See naval power and the maritime influence we can write about that, है ना. So हमारा naval power और maritime influence के बारे में लिख देंगे हर briefly, but this question is not asked, okay. Naval power and maritime influence. In this one we can write about that how Chola was very powerful. We can write about the Southeast Asia. कि Southeast Asia में सबसे powerful कहते थे, है ना. और so we can talk about that how it was so much powerful, especially that we have the two important kings, Raja Raja Chola, and plus we have Rajendra. These two persons are so powerful that they had defeated the forces of Sailendra. ये Sailendra के force को हराते हैं. Sri Vijay Empire was defeated. Sri Vijay Empire. Then especially these people had defeated the Ganganagar Empire. Ganganagar, Tamlinga Empire. These are the Tamlinga Empire. These are the main empire that had been defeated by the Sailendra. We can discuss in. और इनके जो maritime था, ship building industries. Ship बिल्डिंग था वो स्टिच मेथड पे था, है ना. द शिप वाज टू बी मेड थ्रू दी स्टिच शिप बिल्डिंग मेथड, स्टिचिंग द्वारा. सो स्टिचिंग मेथड से शिप इनकी बनती थी. वी कैन डिस्कस अबाउट दैट. डू यू नो लास्ट ईयर ओनली द कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैड साइन MOU विद द इंडियन नेवी टू प्रिपेयर द सेम टाइप ऑफ शिप्स. सेम टाइप के शिप्स को प्रिपेयर करने के लिए इन्होंने मोमेंडम भी साइन किया है. तो आप उन सब चीज़ों को आप एक अच्छे तरह से पॉइंट ऑफ व्यू करके आप आंसर भी कर सकते हैं यहाँ पे. तो दीज आर द मेजर पॉइंट दैट स्टूडेंट वी कैन डिस्कस हियर इन दिस टॉपिक, ओके. अपार्ट फ्रॉम इट वी कैन ऑल्सो इन द कंक्लूजन जो हम लिखेंगे, सो इन द कंक्लूजन वी कैन राइट अबाउट द मोर लेगेसी. In the conclusion, we can write about the more legacy of the Chola. Which legacy? We can talk about the influence on the later dynasties like Pandyas, Nayak and the Vijayanagar were mostly inspired from the Chola. We can say about that because of these things, है ना. Siddhiswar temple and the Gangekonda Cholapuram temple are to be the part of the UNESCO World Heritage Site, है ना. So even today Chola Navy legacy is still remembered with the pride as the maritime powers contributed to the India's rich glory and the rich history of overseas trade and influence, है ना. This way we can write about. तो हम अपना अच्छे आंसर लिख सकते हैं कि इनके जो टेक्निकल मास्टरी है, सब चीज़ें हैं, चोलाज पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट नोन फॉर दिस थिंग्स, है ना. सो दिस इज द वे we can be complete in this answer in this examination, okay student. So I hope that you are able to understand these perspectives in this question, okay. Now let me tell you that what further we should understand. I told you that I will be discussing the 3 questions from these 6 questions. तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है अभी, द क्वेश्चन 2, द एस्टिमेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ पल्लवाज ऑफ कांची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर इन साउथ इंडिया. क्वेश्चन 11 था though the great Cholas are no more 8 but their name is still remembered. Now we will discuss question 12, that is how far is it correct to say that the first world war was fought essentially for the preservation of the balance of power. चलिए इस क्वेश्चन को अब हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करते हैं. क्वेश्चन हमारा है दी वर्ल्ड वार जो था क्या ये प्रिजर्वेशन ऑफ द पावर के लिए लड़ी गई थी. तो हम इसमें ब्रीफली इंट्रोडक्शन लिखेंगे स्टूडेंट दैट व्हाट इज वर्ल्ड वार 1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पॉइंट आउट करेंगे वर्ल्ड वार 1 है क्या. सो वी विल राइट एन इंट्रोडक्शन. इन द इंट्रोडक्शन वी विल राइट अबाउट व्हाट इज वर्ल्ड वार 1, है ना. कब से कब हुआ, तो 1914 to 1918. Who are the important power had participated and all. So we will discuss in briefly in the 30 word
वी विल राइट अबाउट व्हाट इज वर्ल्ड वार वन। हम ये लिख सकते हैं दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज मोस्ट डिस्ट्रोफिक इवेंट्स इन द ह्यूमन हिस्ट्री with profound consequences for global politics, society, and the economy. At its core, we can say that war was indeed influenced by the European quest for preservation of the balance of power, but it was also shaped by various other factors like nationalism, imperialism, materialism, and alliances. So, see, balance of power was not only the major reason, student. The other reasons are also there, है ना? So, this is briefly we can discuss in the introduction. Then we will write about the. We will divide our answer into three to four part. पहला बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा थ्योरी के फैक्टर्स बियॉन्ड द बैलेंस ऑफ पावर हम लिख सकते हैं। देन हम लिख सकते हैं डिड द बैलेंस ऑफ पावर फेल, बैलेंस ऑफ पावर फेल हुआ था, और क्या वास्तव में जो वार है वो बैलेंस ऑफ पावर के लिए हुआ था या नहीं हुआ था। लेट अस डिस्कस इन डिटेल दैट व्हाट इज द मेजर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स दैट शुड बी बेटर फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट। ओके, चलिए फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो हमने क्या देखा, ये बैलेंस ऑफ पावर। तो दूसरी पॉइंट हम इसमें लिखेंगे, वी विल राइट अबाउट द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट द बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। तो हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। सो स्टूडेंट, इन दिस क्वेश्चन स्पेशली द फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट अबाउट व्हाट इज बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी। तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दी ग्रुपिंग। तो ये बैलेंस ऑफ पावर जो स्टूडेंट है वो आपको स्टार्ट होता है कांग्रेस ऑफ वियना से। Congress of Vienna that held in the 1815, and do you know who was the main leader of the Congress of Vienna? Of course, none other than कौन थे बताइए? The important leaders of the Congress of Vienna, especially Metternich थे, Austrian chancellor. So he wanted to restore the European world in the pre-Napoleonic era. The Napoleon has devastated the whole of the order now, so he wanted to restore the world. So balance of power started from the Congress of Vienna, especially under the leadership of the Metternich of Austria Chancellor. He wanted to restore the order. ये चाहते थे ऐसा यूरोप रहे जो स्टेबल रहे। नेपोलियन के बाद ऐसा कोई भी आदमी ना आए जो यूरोप को तोड़ सके। सो दिस इज अ बैलेंस ऑफ पावर वी कैन डिस्कस अबाउट। आफ्टर दिस वन, अब क्या हुआ जब दो देश स्पेशली बिकेम इंडिपेंडेंट एंड दे गॉट यूनाइटेड, स्पेशली इटली एंड जर्मनी, तो यहाँ पे दो ग्रुपिंग्स होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग हैपन आफ्टर दिस वन। तो हमें यहाँ पे ग्रुपिंग की बात करते हैं, अलायंसेस। So especially in the 1870s and this time there are two types of alliances. One alliance here is known as ट्रिपल अलायंस और दूसरे का नाम था ट्रिपल इंटेंट। सो इन द ट्रिपल अलायंस स्टूडेंट, द कंट्री जो हमारे है, स्पेशली दिस कंट्री इन द ट्रिपल अलायंस वाज विच वन? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड इटली। सो वी हैव जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड देन वी हैव इटली इज अ कंट्री। बट यहाँ पे कौन है? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया इज अ कंट्री। सो दिस इज अलायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, that when this thing was happening on in the 1870s and 80s, some other people become very powerful, जिसको हम बोलते हैं the preservation of the status quo। तो यहाँ पे जर्मनी become very powerful। So here at Germany become very powerful, especially under the leadership of Bismarck, and then second person later on we have their leaders after Bismarck, we have Kaiser William II। So हमारा है काइजर William II. So Germany become very powerful here. Right? So we can write about that Germany wanted to destroy the order of the balance of power because it was getting more and more powerful. So we can write about this one. फिर हमारा इस क्वेश्चन में हम इसमें लिखेंगे और क्या पर्सपेक्टिव्स है। अगर आप बात करें हिस्टोरियन की, एक बहुत फेमस हिस्टोरियन है JP टेलर। लेट मी राइट अ नेम। देयर इज अ वेरी फेमस हिस्टोरियन कॉल्ड JP टेलर। He has written the history on the World War I. He doubt that indeed the World War I was fight for the balance of power only, है ना? ये इनके बारे में लिखते हैं। Then we will write about the third perspective कि क्या बैलेंस ऑफ पावर की थ्रेट था, है ना? तो पॉइंट है फैक्टर्स बियॉन्ड द बैलेंस ऑफ पावर हम लिखे हैं, फैक्टर्स दैट इज बियॉन्ड द बैलेंस ऑफ पावर। तो we will write about that factors of World War I beyond the balance of power।
So student, in this question, in this topic, we will especially focus on the idea of nationalism. Nationalism was also important reason behind the balance of power. फिर हमारे पास है imperialism. So हमारा टॉपिक है this can be written in nationalism, imperialism. Then we have the militarism. Then we have Moroccan crisis. Then we have Baltic War, Bosnia crisis. Then we have two Baltic wars. So these are the student. Other factors are also there responsible. We had the breakout of the First World War. It was not only the balance of power, student. So ये जो मेन चीज़ें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें पर्सपेक्टिव्स क्या है और इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा. So सबसे पहले नेशनलिज्म स्टूडेंट. यहाँ पे कई सारे देश ऐसे थे हु वांटेड टू बी मोर एंड मोर नेशनलाइज, स्पेशली आउट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. ऑटोमन एम्पायर को तोड़ के ये लोग अपने आप को मजबूत बनाना चाहते थे. खासकर जो बाल्टिक नेशंस है, अगर आप बात करें, ऑस्ट्रिया हंगरी इज फाइटिंग फॉर देयर कॉज. Austria Hungary is fighting for their cause. Apart from Austria Hungary, we have the Slavic nations. Serbia था, Austria Hungary था. Then we have the Bosnians हैं. Then we have the Greece है. These all countries were fighting for their nations. और यहाँ पे सेकेंड टॉपिक हमारा मिलिट्रिज्म जो मैंने बोला, इसमें क्या था कि ऑल द पीपल जर्मनी एंड ब्रिटेन एंड फ्रांस दे वर बिकमिंग मोर एंड मोर मिलिट्रिस्टिक पावरफुल. इम्पीरियलिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा बोस्निया और मोरक्कन क्राइसिस है. फ्रांस एंड जर्मनी वाज फाइटिंग ईच अदर फॉर द मोरक्को कंट्रोल दैट इज सिचुएटेड इन टू द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका. सो मोरक्कन क्राइसिस, बोस्निया क्राइसिस, सब चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. इसी बीच में क्या होता है, 1912 to 13 में दो वार होता है, crisis in the Balkans. So Balkan fight is a very important one because you know that student there are 4 countries in the Balkan regions. एक तो सर्बिया है, दूसरी बात बुल्गारिया है. So Serbia, Greece, Montenegro and Bulgaria, these people were fighting for each other because of the capture of this one. और इसी बीच में क्या होता है, Austria has captured Bosnia from Turkish Empire. So when Bosnia was captured, the Serbia people used to believe that the major part of the Bosnia population belongs to Serbians. तो सर्बियन का जो मेजर पॉपुलेशन है वो इनका है. तो आपको पता होना चाहिए, जैसे ऑस्ट्रिया ने सर्बिया से कुछ एरिया कैप्चर कर लिया तो सर्बिया बिकम वेरी एंग्री ऑन ऑस्ट्रिया बिकॉज इट वांटेड टू कैप्चर मोर एंड मोर लैंड. सो व्हाट हैपेंड देयर आफ्टर, जब ये बाल्टिक वार होती है उसके बाद जर्मनी एंड ब्रिटेन हैड मेड टुगेदर टू डिस्कस दिस क्राइसिस. तो इन्होंने क्या किया कि बाल्कन वार को हम चुप कराते हैं, नहीं तो वर्ल्ड वार जैसा कुछ आ सकता है. सो स्पेशली जर्मनी एंड ब्रिटेन वांटेड टू सॉल्व दिस मैटर. सो इट हैड both the country had distributed the captured territories by these 4 countries, Serbia, Greece, Montenegro and Bulgaria, from the Ottoman Empire of the Turkey into 4 parts. But the Serbian and Bulgarian people were not happy what they have got. So these people were aspiring for more and more land. ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट पावर है जो इसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं. ठीक है, अब पॉइंट है, डिड द बैलेंस ऑफ पावर एक्चुअली फेल? क्या बैलेंस ऑफ पावर सच में फेल हुआ था? अब इसको हम समझते हैं. ठीक है, पॉइंट नंबर 4 से, did the balance of power actually fail? तो आंसर सिंपल है, अगर आपको पता होना चाहिए. अभी हमने देखा कि 2 देशों में बहुत फाइट हो रही है. वन कंट्री इज ऑस्ट्रिया, ओके, एंड अदर कंट्री इज सर्बिया. 2 देशों में फाइट हो रही है. अब क्या देखते हैं यहाँ पे, जो ऑस्ट्रियन जो चांसलर थे, वी हैव द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया जिसका नाम आप जानते होंगे. सो वी हैव ऑस्ट्रियन चांसलर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट वन. तो स्पेशली व्हेन ही वाज किल्ड, एसेसिनेटेड, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे आने लगती है. तो स्पेशली व्हेन दिस, तो लेट अस डिस्कस इन सम डिटेल कि ऑस्ट्रेलियन के जो चांसलर कौन थे और वो कैसे उनको मारे जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ना. तो जो उनके जो चांसलर है फर्डिनांड, जब उनकी डेथ होती है तो यहाँ पे प्रॉब्लम से स्टूडेंट यहाँ पे आना शुरू होती है. तो एक बार क्या था, ऑस्ट्रियन चांसलर, we have the Ferdinand, let me write here, Archduke Ferdinand was assassinated by
assassinated by Serbians. जैसे सर्बियन इनको मारा, दिस डेट स्पेशली दिस डेट वाज 28 June. It had given ultimatum till the 28th July, and when the matter was unable to be solved, do you know what happened? Here, let me make you hear more in detail in understanding. So, do you know what happened here is that, especially at this point of time, we have these countries, है ना, ये हमारा मेन कंट्री है. So, Austria had attacked on the Serbia on the 28th of July. ठीक है. So, Russia had attacks on Austria-Hungary on the 29th of July. Germany especially had asked, जो यहाँ पे जो जर्मन कंट्री है, जर्मन had asked withdraw from the war. आप वार से विड्रॉ कर लो. When Russia did not withdraw from the war because Germany was allied with the Austria-Hungary, it attacks on them on the 1st of August. 1st August को अटैक कर देता. And then we have the France and Britain decides to attack on Germany on the 3rd of August. So this is the way the World War I starts in the 1914 on this day. So this is the main point. We can say that yes, balance of power can be the important reason behind this struggle student, है ना. तो हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं कि ये पॉइंट हो सकता है. अब हमारा मेन पॉइंट है, was the war fought for the balance of power. हम दो पॉइंट में हम जो कंक्लूजन लिखेंगे, when we write the conclusion of this question student, our answer will be very simply for this perspective, है ना. So when we write a conclusion, our conclusion should be divided into two part. Part 2 होना चाहिए. कैसे conclusion होना चाहिए? Let me tell you how. The part 1 should be yes, that this World War I fought for the balance of power, and part 2 will be no. Part 2 भी no. तो कैसे, how should we write this conclusion? पहला पॉइंट हमारा रहेगा yes, to some extent the World War I was fought for the balance of power. ये पॉइंट हम लिखेंगे. Then thereafter we will write about no. No कैसे? We will write about it. However, the war cannot be reduced solely on the preservation of the balance of power only. We can write about nationalism, militarism, imperialism, and the alliance system were all major contributor to the outbreak of the World War I. So, assassination of the French Ferdinand was not merely a balance of power issue. It was a result of nationalist tensions in the Balkan regions, which had a 4 countries. कौन से है? Serbia, Greece, Montenegro, and Bulgaria are the major countries. Okay students, so I hope that you are able to understand this all 3 questions. After this one my colleague will take up this further answers और वो आपको और भी चीज़ें एक्सप्लेन करेगी. आपको कोई भी डाउट हो, if you have any doubt upon this certain topics, you feel free to comment on the video. Hereafter I will be discussing with you. मैं आपके साथ फिर इस टॉपिक पे अच्छे से बात करूँगा, ठीक है, और मैं आपके साथ डिस्कस भी कर सकता हूँ अगर कोई भी डाउट हो तो, ठीक है स्टूडेंट. So I hope that you are able to understand this concept. We'll see you in the other video hereafter. Okay, thank you so much.